चलें जी, क्लास जो हो गई है रिकॉर्डिंग पे लग गई है, तो बस अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर जो जो आता रहेगा बीच में देखते रहेंगे उसको, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 2 के अंदर डिफरेंट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये मैंने पेपर ओपन किया है 2/1 May 2019, ओके। इट्स अ 2/1 May 2019 and let's see that what we have in this paper regarding those topics. So the first question is for that. It's an everyday maths question. They say that in 2019, Lauren had a monthly income of $1,800. How much was her total in 2017? So, first of all, in 2017, Lauren had a monthly income of 1,800. And how much was her total income in 2017? So you can see that it's a monthly income, and total means that 1 year, and we know that in 1 year we have 12 months. Agree? So 1,800 times 12. So please use your calculator wisely and tell me what is the answer. 1,800 times 12. Ishal, use your calculator. Okay, I want to interact with you non-stop. 1,800 times 12. So 21,600 is her yearly income. Is this clear, everybody? Because this question was very easy. It was everyday maths. Yes or no? Sir. Good job. Okay, in the next part, they say that from her monthly income of 1,800, Lauren paid the following. She paid these things monthly from monthly income. So, percentage of 1,800 did she save? So, for example, total was 1,800, and spendings were in total 500 plus 250 plus 120 plus 240 plus 70. So what is the answer, beta? Hurara? What is the answer, beta? Hurara? 500 plus 240, 50 plus 120 plus 240 plus 70. Please use your calculator, or let me find my one. So you should have a calculator during the class, yeah. 1,180. 1,180. 80. This is the total spending. Each month, Lawrence saved the rest of the income. So saving is 1,800 minus 1,180. So the answer is what? 620. According to the question, they say that what percentage of 1,800 did she save? So they require percentage saving, right, Hurera? So percentage saving, it is equals to saving, which is 620, and out of 1,800 times 100. So 0, 0 cancelled. So check 620 divided by 18. What's the answer? 620 divided by 18. So the answer is 34.4%. 34.4%. Is this clear, everybody? Yes, sir. Okay, so in the next part, they say that Lauren monthly income was increased by 3.6%. So it increased, it means it is now 103.6% because it is increased. Yes or no? अगर ये डिक्रीज होता तो 3.6 100 से माइनस कर लेते because original is always 100%. So 100% it is equals to $1,800, and 103%, sorry, 103.3. 103.3% is equal, oh sorry, it's 0.6. 103.6% is equals to x, so cross multiply. So it means that x multiplied by 100% is the same x, and 1,800 times 103.6%. So don't forget to write the percentage sign in the calculator, okay? Otherwise you'll feel an error. Error आएगा paper में. So what's the answer, बच्चे? Zahir, use your calculator, please. बेटा कैलकुलेटर तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग. कैलकुलेटर ओपन करके बैठे सब. मेक इट क्विक.
Hurera, can you hear me? Yes, sir. Better, you can use the calculator then. 828.8. 800 and 828.8. it's wrong. It's 1800 multiplied by 103.6%. The answer I must be forgot. greater. I wrote 800. Okay. 1864.8. What? 18? 64.8. Okay, 1864. This answer seems nice because it is greater than 1800. Because Ishal, why this answer was wrong? Because she got increased. Oh. Wait a minute. Wait a minute. Okay, we did some error. It was monthly rent. So we have to check what rent is, not in her income. Wait a minute. So rent was 500. So we have to replace 1800 by 500. We took 1800 total income. So it's 500. Just replace 500 with our. ठीक है प्लीज बेटा बी केयरफुल ये गलती हो गई हमसे हमने क्वेश्चन में रेंट नहीं पढ़ा 500 लिख दें जी अब जरा कर लें रेंट क्या हो गया क्योंकि वो रेंट था टोटल इनकम नहीं इंक्रीज हुई यस 518. 500 एंड 18. okay 518 was her yearly rent so 3 marks for that 2 marks for that and 1 mark for that so it was very basic question so वह रिकॉर्डिंग हो रही है जो बच्चा लेट आ रहा है वो स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स देख सकता है in 2017 Lauren monthly income was 1800 was 25% less than our income in 2016 okay so let's have we have 2 years so 2016 and 2017 okay wait a minute okay according to the question in 2017 Lauren monthly income was 1800 so monthly income was 1800 in 2017 but this was 25% less than her monthly income in 2016 so it means that it was 75% it was 100% and the original is missing so that's how we'll calculate because the question according to the question it says that in 2017 she got 25% less than 2016 so original is always 100% just cross multiply बस cross multiply कर दें ईयर आ जाए करें तो इस तरह का टेबल बना लें ताकि आसान हो जाए आपके लिए तो 75% x is equals to 1800 times 100% so times 100% so x is equals to 1800 divided by 75%. Don't forget to write the percentage sign in the calculator, okay? So what's the answer? Ramsha, start interacting. Sir, 2400. So it was 2400 in 2016. Understood everybody? Ramsha, Horera. Yes. Okay. So this was all about everyday maths from May, June, from it was from May, June 2019. It's paper 2-1. Okay. So you can open your papers if you have them. So it's all about statistics. So we are not going to practice statistics. We are going to practice only basic maths and graphical solutions and coordinate geometry. So wait a minute. Okay, functions. We can practice functions as well. Question number 7. You can see that they say that f of x is equals to 5x minus 7. So it's f6 means put 6 in place of x in f of x. So f6 is equals to 5 times 6 minus 7. 5 6 is 30. 30 minus 7 is 23. That's the final answer. G inverse of x, if you remember, we have 4 steps. The first step is let function equals y. According to the question, g of x is equals to x plus 4 by 3. So y is equals to
x plus 4 divided by 3. Make x the subject. Second step is make x the subject. X the subject. So 3y is equals to x plus 4. Plus 4 will go there. So 3y minus 4 is equals to x. Now x is already a subject. Third step is replace x with y. With y. So it would be 3x minus 4 is equals to y. So this is your inverse function. So write that 3x minus 4 as in your inverse function of the g inverse of x. Is this clear, everybody? Is this easy? Any questions so far? Okay, good job. So now we have given that fp. So first of all, I have to put p in the f function. So fp means that, wait a minute, fp, first of all, let me write the functions. Fp is equals to 5p minus 7. We have gp as well. Gp is equals to p plus 4 divided by 3. So now in the equation, so this is what I wanted to know about the question. So fp is 5p minus 7 and gp is p plus 4 divided by 3 minus 2. Okay, now I'm going to take minus 2 on the left hand side. So 5p minus 7 plus 2 is equals to p plus 4 divided by 3. 5p minus 5 is equals to p plus 4 divided by 3. Ishal, we know this 3 is in division there. So it will go there as multiplication. So it would be 15p minus 15 is equals to p plus 4. So we want to make find p because p is the subject. So p will go there. So 15p minus p is equals to plus 15 plus 4. Is this clear, everybody? Yes or no? So 14p is equals to 19 and divided by 14 on both sides. So p cancel. So 19 by 14. Better start writing. ये आप लोग लिखें थी. There's a, I'll be right back. Wait a minute. जी मेरे बच्चा, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो बताएं मुझे प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. हाँ जी, इज दिस इजी एवरीबॉडी? ओके, हुरैरा, रमशा, नूर. Sir. Okay, in the next part they say that g of 5x minus 7. So first of all, let's see what g of x is. G of x is equals to x plus 4 divided by 3, as we know in the question, right? You can see that g of x is equals to x plus 4 divided by 3. So now they say that put 5x minus 7 in place of gx. So g into 5x minus 7. So 5x minus 7 plus 4 divided by 3. What I did, I just replaced x with 5x minus 1. That's it. So it is 5x minus 3 divided by 3. So now according to the question, they say that that is equals to ax plus b. So let's split this denominator 3. 5x divided by 3 minus 3 by 3. So can I say everybody that it is equals to 5x by 3 minus 1? So I know that the value of a can be found by using the comparison method, that ax plus b. The value of a is 5 by 3 and the value of b is negative 1. Can I say that, everybody? It's for 3 marks and it was a piece of cake. Nothing more than that. Is this clear, everybody? देख लिया बेटा सबने?
Well done. Okay, Hurera, Ramsha. Hurera, Ramsha लिख लिया बेटा? Yes, sir. Okay, Yes, नूर sir. लिख लिया बेटा? Sir. ओके, स्टैटिस्टिक्स हम लोग अगले वीक स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग जरा आगे चलेंगे क्योंकि जो मंडे को टेस्ट है आपका वही टेस्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी। ठीक है जी। सो ओके, ये देख लेते हैं। अच्छा, ये ग्राफ आ गया बीच में, चलो दैट्स गुड। अच्छा, ये हम लोगों ने ऐसे भी ऑलरेडी पढ़ा नहीं है, ऊपर वाला अभी तक मेंसुरेशन आपको मैंने एकेडमी में नहीं पढ़ाया, तो हम लोग नीचे वाला पार्ट करते हैं। ऑन द ग्रिड on the next page, draw the graph of v is equals to 40 minus 5x square for 1 to 7 and 3 points have been plotted for you. So it means that next page पे ग्राफ बना हुआ है लेकिन टेबल नहीं है, तो टेबल हम लोग खुद बना लेते हैं। ठीक है बेटा? So we will draw a table by our own self. So we can see that it's x and that is y. So from 1 to 7, so 1 2 3 4 5 6 and 7. So we have a equation which is minus 5x square plus 40x, or we know this that it's a quadratic equation, right? So we can complete the equation table using the calculator, and because we need 5 points, so table is the best option. So let's try with the table and how to plot this, और ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा ताकि आपको कल को समझ भी आ जाए। ठीक है? Okay, use your calculator, close it. Wait a minute. Okay, you have to press the menu button. In my calculator, it's menu button, but in your calculator, it might be the mode button. So menu, and you have to search for the table thing in your calculator. In my calculator, it is number 9. We get f of x, so we have to plot this function. So minus 5 alpha, and this is x square minus 5x square plus 40 and alpha and x. So that's what the function is in the question. So equals, I don't have another function, so I'm going to press equals to again. So now the starting point is 1, but the ending point in my table is 7. I need one step because I need one complete jump from 1 to 2. I'm not interested in 1.5 or 2.5. So just leave step 1. Okay, boom. Then we have the table. So that is 1 is 35. 2 is 60, 3 is 75, 4 is 80. Let's go down. 5 is 75. Okay, then move. 6 is 60 and 7 is 35. So we have the table now. No, we don't need calculator at all. So let me just pick this table because we need that table in on the next page. So we'll just copy it. Okay. So let me place the table here so that we can easily find out. Okay, we can see that we have to plot the values. They say that they have plotted the 3 points for us. We can see that 1 and 35 is already plotted, 2 and 60 is already plotted, and 3 and 75 is already plotted. We need to plot 0.44 and it's 80. So let me write with the red color. So 4 and 80. So first make a dot and then cross. 5 and 75, so it would be 5 and 75 would be here because 3 and 75 is also there. You can see that over here. Can you see that, everybody? Okay, for 6 and 60, so 6 and 60 and 7 and 35, so 7 and 35 would be here. Everybody, is this clear? I think it is crystal clear. Please say something if you have any question in mind, because I'm sitting here just for you guys. Anji, is this clear, everybody? Yes, sir. Okay, so now it's time to plot them. So one by one. So first to second पहले चले जाया करें. The second to third, the third to fourth. So you have to smoothly turn the graph, okay? Because you don't go like that, okay? It's a wrong technique. So smoothly turn the graph. You can turn the page the way I'm rotating my iPad because I need a smooth curve. Okay.
So this is what the graph of this function is. But I can see that this graph can be halved by the line x is equals to 4. Agree? हम इसकी मिरर लाइन लगा सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं. Exactly? Can you see that? बिल्कुल आइडेंटिकल ग्राफ बना है, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी. एग्री रामशा? Yes. Okay. So now it's time to just look at them. Now they say they use your graph to find the possible values of x when one of these prism with a volume of 50. In the question, this area was volume. This area was volume. So they say the volume of 50 centimeters square. Walaikum assalam. So 50 centimeters square. We know that we have to use the ruler, and we know that volume 50 is here. So we have to draw a line here like that. So the graph is crossing the y-axis at this point. So we can see that we have to check the points. So this is one of the point, and another point is here, right, Ramsha? So one point is 1.11. Sorry, it's one pointing. It's 1.5 and 1.55, and another point is 6.5. So we got the two values for x. So 1.55 and 6.5 is the final answer for 2 marks. So that's how we can do it. Now, this graph is technically, according to the question, it's a graph of a cuboid. Agree? It's a graph of a cuboid. On the next page, so then they say that a cuboid has a length of 4 centimeter, width 3 centimeter, and a height x centimeter. By drawing a suitable line on the graph, find the value of x when the prism and the cuboid have the same volume. So what if अभी ये पार्ट छोड़ देते हैं, आपको मेंसुरेशन मैंने नहीं कराया है. सो अभी आपको मैंने मेंसुरेशन नहीं कराया है, तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्यूबॉइड और आपको प्रिज्म समझाना पड़ेगा पहले. सो इस तरह का क्वेश्चन कल के टेस्ट में नहीं होगा. चलें जी, मई जून का केस हमारे पास हो चुका खत्म. ठीक है, मई जून का केस हमारे पास हो चुका खत्म. इट्स 2-1. तो ये डन. ये मैं सब अगर इसके जरा स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ ताकि हमारे पास नोट्स आ जाएं क्लास के. थोड़ा सा इसको जरा 1 मिनट सबक करें बस. ये क्वेश्चन हमने किया है इसमें ये वाला फंक्शंस वाला क्वेश्चन. ओके, डन. सेव टू फोटोज. ओके, या हमने एवरीडे मैथ का भी पहला क्वेश्चन किया है इसमें. सो डन. सेव टू फोटो. जो लोग अभी आए हैं तो काइंडली कोशिश करें कि अभी अगले पेपर के लिए अपना पेपर मेरे साथ ही ओपन कर लें और उसमें लिख लें. ओके, सो 2-1 था. अभी हम लोग 2-2 देख लेते हैं कि 2-2 में व्हाट वी हैव. ओके, सो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो शायद हमने किया भी है. ये शोज वाला क्वेश्चन हमने किया, आपको टेस्ट में भी दिया था मैंने शायद यही क्वेश्चन, राइट? एवरीबॉडी रिमेंबर दैट, रामशा, हुरैरा? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, तो लेट्स प्रोसीड एंड चेक वेयर द ग्राफ इज. ओके, वी आर डन विद दिस ग्राफ एज वेल. ये हमने क्लास में भी किया है ग्राफ. सो लेट्स गो बैक. नवंबर में चेक करते हैं. इट्स 2019. पहले मुझे क्वेश्चन सेलेक्ट करने दें, फिर हम लोग करते हैं आगे प्रोसीड. क्योंकि मैं ईयरली में करवा रहा हूँ, तो ईयरली के अंदर हम लोग को वर्कशीट जो है ना, वो इसके लिए इस टाइम पे नहीं अच्छी होती. बस वर्कशीट से बेहतर है कि आप लोग ईयरली में क्वेश्चंस को है ना वो कर लिया करें. चलें, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी. बेटा ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 2019 2-2. October November 2019 and 2-2. They say that Tanya owns a small business and Tanya has 4 employees. Every week, the employees each work for 7 into 3 by 4 hours each day for 5 weeks. Each employee is paid 15.20 per hour. So we know that they work for that much hours. So total hours, we have to find out total hours and calculate the total amount Tanya pays for her 4 employees. So एक के लिए find करते हैं, we'll times it by 4. So first of all, we have the total hours worked.
So it's 7 into 3 by 4 times 5. So we have the calculator for that. तो इस पर्पस के लिए कैलकुलेटर अलाउड है। आप लोग अपना दिमाग यहाँ पे खराब नहीं करना, बस सिंपल इज दैट। कैलकुलेटर में इसको पुट करें एंड गेट द रिजल्ट। तो मैं ये इसको गायब कर देता हूँ। कैलकुलेटर में फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन लगाने के लिए शिफ्ट और फ्रैक्शन का बटन दबाएं तो वी गेट अ मिक्स फ्रैक्शन। ओके, सो 7 एंड दैट्स 3, दैट्स 4 times 5. So the answer is 38.75 is the hour. 38 point, wait a minute, 38.75 hours per week. Okay. Calculated total amount आने पे for an employee in 1 week. So 38.75 times 4 employees. There are 4 employees, and there the answer is 15.20 per hour. So 38.75 multiply with 4 multiply with 15.20. So she'll pay $2,356 to 4 employees per week. And if you want, and if the question in the exam is to find calculate the total amount Tanya pay for 1 employee, so divide by 4 the answer. So there are 4 employees, so that is the reason 589 per employee. Is this clear, everybody? I think the question was easy. Yes or no? Everybody? Okay. Now they say that the business made a profit of 25,700 in 2017 and compared to the 2018. So we have technically 2 years. So let's make this table like that. So it's easy then. 2017, 2018. Let's read the question. The business made a profit of 25,700. So 25,700 in 2017 compared with the 2018. So in 2018 it was 22,108. So now they say that calculate the percentage decrease in the profit. So we need to find out the percentage decrease. Agree that how much that percent is. So we know that this is 100%. This is what? 100%, and that is x. So we don't know that this is how much percent. So just cross multiply और हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। हमारे पास दूसरा तरीका भी है इसका, हम लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं कि परसेंटेज डिक्रीज निकाल लें। वो भी मैं तरीका आपको करके दिखाता हूँ। तो हम लोग ये वाला टेबल साइड से इरेज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट इरेजर करते हैं। ये वाला टेबल यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। तो वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 25,700 x is equal 100% of 22108 is the same thing. So 22108, so divide by 25700, 25 x percent है, okay ये, so it is x percent 25700, so x percent is equals to 22108 divide by 25, okay, 25700. So the answer is 0.86. 0.86. So percentage बनाने के लिए we need to times it with 100. So it is 86%. ठीक है? But if the question if 18%, so we can see that it's a 14% reduction. 100 से 86 हो गया. So we can also use another technique so to see the decrease. This is the first technique, okay? ये first technique है. I hope all of you get it. If not, so then we can use another technique which is decrease method. We can see that the decrease happened here, and how much decrease decrease is, that's the second technique. Decrease is 25700 minus 22102. So the answer is 25700 minus 22102. It's 3598. 3598. Now it's percentage decrease. So 3598 divided by the actual, which is 25,700 multiplied by 100. So divide by, answer divide by 25700 times 100. So the answer is 14% directly. Is this clear, everybody? This is the second technique. Please start writing. जरा लिख लें अपने पास. Wait a minute. हाँ जी, hello.
ओके एवरीबॉडी, सो बेटा सबने लिख लिया ये क्वेश्चन? लिख लिया जी बेटा सबने? यस और नो? रमशा, हुरैरा, नूर? Yes. ओके Yes, sir. ओके, so then moving forward with the last part, they say that Tanya must add 8% sales tax in the initial cost of the job. She then add 15% to the cost including sales tax. Find the amount to charge a client. Tanya charges one client a total of 465.75 for a job. Calculate the initial cost of this job. So what is that, please? Read the question and tell me. बेटा पेपर में ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, मैंने नहीं. पहले तानिया ने क्या किया है कि तानिया must add 8% sales tax to the initial cost of the job. ठीक है? She then adds 8% ऐड करने के बाद दोबारा she then adds 15% to the cost. या हम ऐसे नहीं कर सकते कि 15 plus 8 23 लिख दें. No. She then adds 15% to the cost including sales tax to find the amount to charge a client. Tanya charges one client a total of $465.75 for a job. So first of all, we should know that what initial cost of this job is. So we should know that what is this overall percentage increase. Okay? So I recommend one method to all my students, that you have to suppose whenever you have overall percentage increase. Hurera and Ramsha, beta, in this case, something happened. Agree? And she added sales tax of 8%. Then she added 15% to the cost. Is this clear? Is this clear? For example, let me drive this with an example. It's easy. An exam you can do it. For example, the cost is 100%, $100. Now she added say 8% sales tax. 8% sales tax. So after 8% sales tax, it is $108. Is this clear, everybody? Yes or no? ये पता होना चाहिए कि कैसे आ गया ये. 100 multiplied by 108% करेंगे तो we'll get this $108. Is this clear, everybody? Yes or no? बेटा किसी को clear नहीं है तो पूछ ले बेटा. Hurera, is this clear to you? Yes, sir. Okay, and then she then adds 15% to the cost including sales tax, and then she has to add 15% more. So now she'll do what? In the next step, she'll do this is after 15% more. So it would be 115%. So 108 multiply with 115%. What is the result, beta? What is the result? What is the result? 108 multiplied by 115%. हुरैरा बेटा कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन आपने करने हैं, मैंने नहीं. 4.2. Multiply by 115%. So it is 124.2. So now Hurera, can you see that कि अगर हम लोगों ने starting में 23% लिखा होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता, because overall percentage increase in percentage is 24.2%. Can you see that 100 minus 124.2 is 24.2? Is this clear? Is this clear, everybody? Yes or no? बेटा यार yes or no का भी कोई जवाब नहीं दे रहा ना, तो फिर मैं बंद करता हूँ क्लास. Sir. Okay. Now overall percentage increase is 24.2%. अगर हम लोग स्टार्टिंग में 8 plus 15 करते तो 23 आता, वो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता.
तो हमें वो एक परसेंटेज लगी है, उसके बाद दूसरी लगी है, राइट? So now we have to do that. We calculate the initial cost of the job, and we know that initial is always 100%, and 124.2% is equals to 465.75 in the question. 465.75 cross multiply it. We know there's 100% of the 465.75 is the same thing, so it would be 124.2% x is equals to 465.75. So dividing both sides by 124.2%. Don't forget to write the percentage sign in the calculator. So Hurera, can you see that it's a fraction button? You have to write 465.75 divide by 124.2%. So it is 375. Okay, is this clear, everybody? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now please everybody, मैं जरा question को justify भी करूँगा. Like for example, see 375 is our answer. Let's add 8% tax first. 8% tax add करते हैं तो मतलब 108% होगा. 375 multiply by 108%. 108% ये आ गया जी हमारे पास 405 after tax. After tax, now I have to add 15% more. So 405 multiplied by 115%. I'm just justifying the question. See, we got 465.75 after 15% tax. समझ आ गई सबको बेटा? It's a justification for the question. Is this clear, everybody? Hurera, Ramsha, Noor, Barira, is this clear, beta? Sir. Good job. Okay. Now in the question they say that Tanya invests 8,500 in an account paying 3.1% per year compound interest. So we know that the compound interest is equals to future value. Let me just remove the calculator now. Okay, screen थोड़ी बड़ी हो जाए. Okay. Compound interest. So at the end of the 5 years, she has this one. So it is future value. This is your principal amount, and this is rate, and this is your time. So everything is available. Calculate how much money is left in the account after buying the new equipment. So she take 9,000 from the account to buy a new equipment. Okay, that is the cost. This is not the future value. So first of all, उसकी investment को mature करें. Principal bracket 1 plus r power t. 8,500 into 1 plus r is 3.1%, and the time is 5 years. So we have the calculator already. So 8,500 times 8,500 times times और bracket लगा दें 1 plus 3.1%. So shift and the percentage button, shift and percentage button, bracket and the power button, and then it's 5. So the investment is 9,901.75. So now she took 9,300 from the account. So she took 9,300 from the account. Now money is left. So money left would be 9,901.75 minus 9,300. So minus 9,300. As it's a currency, तो मैं इसको 3 significant figure पे नहीं cent पे round करूँगा. So I'll write 76. So I'll write 601.76 cents. So 601.76 cent is the money left in her account. Is this clear, everybody? सबने लिख लिया बेटा? Yes, It's sir. October November 19 का question है ये, ठीक है? Okay, Hurara is here. बेटा रमशा किधर चली गई है? Wait a minute. आप लोग जरा लिख लें जरा जल्दी से, मैं मैसेज करता हूँ उसको.
चलें जी, इसकी एक ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छा सवाल था, इसमें बहुत सारे केसेस थे और अगर आपको ये सारे केसेस आ जाते हैं तो आप एवरीडे मैथ्स के गुरु हो जाएंगे। मतलब इसमें अच्छा क्वेश्चन था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो ये तो वो आ गया जी, ग्राफ ऑफ फंक्शन है। ये भी हमने ग्राफ ऑफ फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन क्लास में बनाया है ना एवरीबॉडी। Yes, sir. We are done with the question already, so let's see if we have something for the coordinate geometry. If we have it, so that would be better, and if not, so then we have to proceed the questions in the next past paper. So we have nothing related to coordinate geometry in this paper. So we have opened it 2 to October, November. So let's move from October, November, ठीक है। अक्टूबर नवंबर से मूव करते हैं 4024 पास पेपर्स। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और आप लोगों को ना आ रहा हो? 2022 में देखें कि अक्टूबर नवंबर में क्या आया हुआ था ग्राफ से रिलेटेड। ये ग्राफ है लेकिन ये अभी मैंने आपको मेंसुरेशन नहीं कराई, तो आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको छोड़ देते हैं। 2-1 में देखते हैं क्योंकि मेंशन और ग्राफ जो है ना इकट्ठा हो गया। चलें जी 2-1 देख लें जरा। ओके हुरैरा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट द टेबल एंड लुक एट दैट। ये एक एवरीडे मैथ्स का क्वेश्चन भी है। मैं चाहूंगा फिर ये क्वेश्चन आप लोग खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है। करना चाहेंगे एवरीबॉडी? इट्स 2022 पेपर। करा देता हूँ। Abid works in an office for 5 days each week, and each day he works from 8:15 to 12:40, and then from 13:30 to 17. Work out the total time Abid works in 1 week. So first of all, we have to calculate the time. So we have to calculate the time, और हम लोगों को टाइम जो है वो कैलकुलेटर पे करना आता है, तो हमारा टाइम बचेगा। So what we have to do, just open the calculator, use the time button efficiently. Each day he works from 8:15 to 12:40. So 12:40 minus 8 and 15. So that is 4 hour and 25 minutes, 4 hours and 25 minutes, and 17:00 minus 13:30 minute button. So it is 3 hours and 30 minutes. तो दोनों को ऐड कर लें, प्लस का बटन मैं दबा देता हूँ, and it's 04:25 and the answer is 7 hour 55 minutes. So S&D कर लेते हैं जरा। It is 7.9167 hours, ठीक है। ये पॉइंट में हो गया, ठीक है, घंटे। Okay, work out the time he works for this one, works in 1 week. So okay, 7 hour 55 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 week के लिए, तो 5 days के साथ मल्टीप्लाई कर दें, we get that 39 hours and 35 minute is the answer. आंसर आवर और मिनट में देना था। So 39 आवर्स काम करता है और 35 मिनट काम करता है। 2 मिनट का क्वेश्चन। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है टाइम से रिलेटेड, कैलकुलेटर में डालना है, मैंने आपके सामने कर दिया ताकि आप लोगों को ये चीज रिवाइज हो जाए। क्लियर एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चन सो फार? गुड जॉब रमशा। इज दिस इजी मेरा बच्चा? Sir. बेटा जहाँ पे समय जी बरीरा। Yes, sir. ओके, Abid earns 14.20 per hour and he is given a pay increase of 5%. Calculate the amount Abid earns per hour after the increase. So it means that he will get now 105%. Okay. Sir, why don't we? बेटा उधर ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि that Abid is working in an office for 5 days each a week, not a 7 days. That's the reason कि हम इसको 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया। Okay. Abid earns 14.20 hours and he got an increase of 5%. So times 105% increase हुआ है। Decrease होता मैं 95% लिखता। So 14.20
14.20 times 105%. So the answer is he will get $14.91. So it was easy. Okay, each month Abid divides his earning between rent bill and saving. Okay, he uses 20% of the earning for rent and 3/8 of the earning for the bill, and the rest of the earnings are savings. Okay, so 20% of the earnings are rent. Okay. Find the ratio of rent bill and savings. So first of all we should know that what ratio is. So हम लोगों ने पहले यहाँ पे ratio लिखना है. Simplest form में 3 नंबर का question है. तो rent is 20 out of 100, which is 20%, which is 1 out of 5. Is this clear? This is rent. Okay. But then he uses earning for the bills. So bill is 3 out of 8. Bill is 3 out of 8. Is this clear? Okay, the rest is saving, and we don't know that what saving is. Saving is X. We don't know. So first of all, we should know that what 3 divided by 8 is. And we should know that total is 1. Total क्या होता है हमेशा? Total probability 1 होती है. टोटल प्रोबेबिलिटी भी 1 होती है, और आपको याद होना चाहिए कि अगर आप डेसिमल में किसी भी चीज को करते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि कैसे है. सो फाइंड द रेशियो. वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो दैट व्हाट दैट रेशियो इज. तो एक तरीका तो ये है कि आप सबको पहले फ्रैक्शन में बना लो, सबको आप पहले परसेंटेज में बना लो. दैट इज व्हाट योर चॉइस इज. तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं सबको परसेंटेज में बना लेता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज करते हैं, तो रेशियो ही लेना है ना. तो 20% हो गया. ओके. हुरैरा बेटा बिल जो है ना वो 3/8 है, और किसी नंबर को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज इक्वल टू 37.5. तो ये आ गया जी 37.5%. और टोटल होती है हमेशा 100, तो दैट इज सेविंग. सो सेविंग क्या है जी? 100 माइनस आंसर माइनस 20%. 20, तो बस एक ही बात होगी. सो द आंसर इज 42.5%. ठीक है जी. अब जरा ऐसा करते हैं कि इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना जरूरी है. ठीक है जी. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने लिखने और रेंट को लिख लेते हैं. रेंट, फिर है बिल, और फिर है सेविंग. ठीक है जी. रेंट इज 20%. तो परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही नंबर लिख लेते हैं. सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, परसेंटेज और इग्नोर माने. यहाँ पे बिल है 37.5 और यहाँ पर है 42.5. इट इज 42.5. ठीक है जी. सबको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि दरमियान में जो 2 नंबर हैं ये आपके पास लिखे हुए हैं किसमें? ये आपके पास लिखे हुए हैं डेसिमल में. तो मैथ्स में ऐसे चीजों को वल्गर डेसिमल बोला जाता है. तो हम तीनों को इकट्ठा डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि इनका हम लोग रेशो निकाल सकते हैं. अगर मैं सबको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो डेसिमल सबके गायब हो जाएंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें ताकि सबके डेसिमल गायब हो जाए. तो यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 375, और यहाँ पर आ जाएगा 425. ठीक है जी. अब हमें लग रहा है कि सब 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 पे डिवाइड कर लें सबको. सो 200 डिवाइड बाय 5 इज 40. तो 375 डिवाइड बाय 5 इज 75. 425 डिवाइड बाय 5 इज 85. अभी सब फिर 5 पे डिवाइड होते हैं. So divide by 5, तो 8. 75 divided by 5 is 15, and 85 divided by 5 is 17. So that is what the simplest ratio is. 8% is his rent, and 15 portions is the bill, and 17 portion he is saving. So that's a good ratio in terms of saving and expenditures. आई होप इज दिस क्लियर एवरीबॉडी. जिसने नहीं लिखा लिख ले. इट्स 2/1 अक्टूबर नवंबर 22, और किसी के पास पेपर नहीं है तो स्क्रीनशॉट मिलेगी. उस स्क्रीनशॉट से आपने पूरे पेपर को करना है सॉल्व. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चन सो फार? ओके जी, वेरी गुड, जबरदस्त. रमशा, हुरैरा एंड नूर, बेटा आपको क्लियर है? हाजिम, इज दिस क्लियर? यस सर. Yes, sir. बेटा याद रखिए रेशो जो है ना, रेशो में जितनी देर आप लोग लिख रहे हैं मैं इतनी देर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको. रेशो के अंदर यू हैव टू
तो ये समथिंग लाइक टोटल होता है। अब इस टोटल का ये कुछ पीसेस थे। दिस टोटल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 pieces. I can see that 20% is rent. So for example, that portion is rent. I can see that 42.5% is savings. So it means that, for example, it is 42.5%. So that point would be the saving and this point would be the bill. सो हमें टोटल के अंदर समझने के लिए पहले सबको मैंने परसेंटेज बनाया। परसेंटेज के लिए मुझे 0.5 अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 करके सबको ये पॉइंट गायब कर दिए। फिर मैंने डिवाइड बाय 5 कर करके इनको सिंप्लीफाई कर दिया। इज दिस क्लियर? रमशा ये देख सकती हैं बेटा कि ये क्यों किया। यहाँ पर ये दोनों ये वाला और ये वाला डेसिमल था, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते। मैथ्स में इसको वल्गर डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप नीचे स्टेप में देखें तो नीचे स्टेप में तीनों जो हैं वो होल नंबर्स हैं, और फिर इनको इजीली डिवाइड बाय 5 करके हमने ये सिंपलीफाइड आंसर जो है नीचे निकाल लिया है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes or no? Any questions so far? If you have the question, you can tell me. Class is already in the recording process. तो जिसको समझ आएगी ठीक है, जिसको समझ नहीं भी आएगी तो वो दोबारा जो है ना इसको एक दफा देखेगा फिर बाद में, ठीक है। ओके, सो बेटा क्वेश्चन देख लें। हुरैरा प्लीज रीड द क्वेश्चन फॉर मी, आई एम टायर्ड। Sir, part D. Part D, yeah. Abid invests $2,400 in a saving account for 4 years. The account pays simple interest at a rate of R% per year. Wait. Now wait. The second line, according to the second line, it is a simple interest. तो जैसे ही आप देखें तो लिख लें साइड पे, simple interest is equals to PRT divided by 100. Now proceed. At the end of 4 years, he receives a total of $153.60 Okay, in interest. Okay, this is what interest is. So it means that interest is available. So it means that 153.60 is equals to the principal 2400. Rate is not given. Time is given 4 and divide by 100. Agree? Is this clear everybody? So we needed to find out the value of R. So 2 zeros को 2 zeros के साथ कैंसिल कर देते हैं, आसान हो जाता है जरा। 24 into 4 क्योंकि ऊपर वाले सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 24 into 4 is what? 96. 96 आता है बेटा कि नहीं? जरा कैलकुलेटर जरा इस्तेमाल करा करें। Yes, sir. It's Divide by 96. okay, divide by 96 on both sides, please. Divide by 96. So the answer is 1.6. 1.6% is the answer. ठीक है बेटा? Right हुरैरा? Easy है बेटा? Yes, sir. ओके रमशा बेटा, क्वेश्चन पार्ट ई जरा करें, पढ़ लें बेटा। Abid invests some money in a different savings account. This account pays compound interest at a rate of Okay, wait. So compound interest is future value is equals to principal bracket 1 plus R% whole power t. Okay, then he pays compound interest at a rate of 1.4% per year. At the end of 5 years, there is $1,822.38 in the account. Calculate the amount of money he invested in the account. Okay, we don't know that how much he invested, but we know that what is the matured value of that investment, which is future value available. So it means that we have to make P the boss of the equation. P को subject बनाना है, तो P को subject बनाने के लिए we know that कि 1 plus R% power T जो है वहाँ पे multiply हो रहा है, तो उसको यहाँ पे divide कर दें और अब उसकी वैल्यू को पुट कर दें तो P आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू है 1822.38 डिवाइड बाय 1 प्लस R% का मतलब है 1.4% और टाइम का मतलब है 5 ईयर्स, तो ये आ जाएगा P। तो कैलकुलेटर में सबको 1 गो में डाल दें क्योंकि यही आपकी मेथोडोलॉजी वर्किंग है। यूज ऑफ द कैलकुलेटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 1822.38 आपने ये अपना टाइम भी ज़ाया करना कि आप पहले 1.4% फाइंड कर रहे हो फिर बार 5 ले रहे हो, तो ये काम जो है कैलकुलेटर का है और आप इसको ही करने दें। पावर 5। So the principal is okay. He invested $1,700. Is this clear, everybody? Ramsha, is this clear, मेरा बच्चा? Yes, sir. बेटा ये तभी आपको क्लियर होगा बरीरा सबको कि जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस जो है खुद करेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है ना एज ए टीचर मैंने नहीं करना, आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
चलें जी जरा आगे देखते हैं कि इसमें कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह या ग्राफ हैं कि नहीं। ओके, ये ग्राफ तो मेरे ख्याल से हमने कल पेपर में किया भी था, कर ले यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू 3। एक बच्चे जरा कैलकुलेटर में एक्स इज इक्वल टू 3 डाल दे जरा। 3 क्यूब डिवाइड बाई 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, ये क्या आ रहा है बेटा, जरा निकाल के बताएं मुझे आंसर। व्हाट इज आंसर बेटा, जरा एक बच्चा आंसर तो बता दे। एवरीबॉडी। ओके, इट्स 6.5। सो लेट्स प्लॉट दिस। So this 2.5. Okay, -2 and +4, -2 and +4 क्यूबिक है तो ये वेव होने वाली है। -1 and 4.5, राइट रमशा? 0 and 2, 1 and -0.5, 1 and -0.5. Okay, 2 and 0, x is 2, 3 and 6.5, 3 and समझ आ रही है बॉयज एंड गर्ल्स? ओ ओ देखिए आपने स्मूथली जो है ना ग्राफ को टर्न करना है। ओके, इट्स अ क्यूबिक ग्राफ रमशा, यू कैन सी दैट इट्स अ वेव। नजर आ रही है बेटा आपको? जी। ओके रमशा, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, देखो जैसे मुझे अगले पार्ट का नहीं पता है, अगर फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यूज योर ग्राफ एंड टू सॉल्व दैट x क्यूब डिवाइड बाय 2 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, तो वी कैन सी दैट इट इज रिटन y इक्वल्स टू 0, यस और नो? यस और नो? and the points where the graph touching the x-axis is the answer. Is this clear? Mm-hmm. Okay, now they say write down the coordinates of the minimum point of the graph for x is greater than 0. First of all, we should know that what is x. X is greater than 0 is that point. Yes or no? Yes or no? Yes. Okay, so minimum point of the graph is that point. I can see that, the black one. Can you see that, everybody? So this is the coordinate of the minimum point. So it x is 1.5, x key value have 1.5 and y is -1. So 1.5 and -1 is the coordinate. Is this clear, everybody? Now Ramsha, can you see that the question मैंने जो पूछा है वो question लिखा भी हुआ है आगे, that x cube to -3x square 3x plus 2 is equals to 0. Can you see that, Ramsha? Yeah. Okay, so we know that in the question it is equals to y, so it means that y is equals to 0. So y is equals to 0 means 3 points, and what these 3 points are: this one, and this one. Agree? So we have to just write the answers. One is -2, or sorry, +2. One is 0.7 plus me, and the third green point is -2.5, -2.6, -2.7, -2.75, -2.75. So 2 marks for that. Is this easy, everybody? Yes or no? Yes. Okay, for example, Hazim, according to the question, they're asking you to find a tan gradient. So let me just make that question by my own. According to the question, it's not available. By drawing tangent, it's written like that. By drawing tangent at x is equals to 2, estimate the gradient. Estimate the gradient of curve. First of all, I can see that x is equals to 2 is somewhere here. Can you see that, everybody? X is equals to 2 is positive x. ये positive x की, ये मैं red shade में डाल रहा हूँ। अच्छा, ये रहने दूँ? मैं ऐसा करता हूँ, सब पेन को जो है ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। मेरा मैंने अच्छा थोड़ा सा मैं हार्ड कर लेंगे पेन को, और टेंजेंट हम लोग लगा लेंगे किसी तरह दूसरे कलर से।
चलो okay, x is equals to 2 is that point. Ramsha, do you agree with me? Yes. Okay, so that is what my tangent is. So नूर इस बेटा रूलर ऐसे रखना है कि खाली इसी पॉइंट को टच करे और पास हो जाए. Is this clear? We know this to we know this to estimate the gradient. We have two techniques. Okay, one is m is equals to rise by run, and we know that Hazim ke that the gradient of this line is positive. Yes or no? Yeah, yes, sir. And the another technique is the formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Is this clear? Yes, sir. Remember that this formula is used when there is a word calculate, and whenever there is a word estimate, you have to estimate the gradient like the rise by run. Okay, everybody? Yes or no? Yeah. Try to use the accurate thing. So I know that I can make a triangle over here. I know that the gradient is positive, right? हो रहा है gradient को तो हमें पता है कि positive होगा. पहले जरा check कर लो कि x axis के नीचे there are 4 units. Yes or no? 0, -1, -2, -3, -4 चार डब्बे हैं. Agree? और x axis के ऊपर है 1, 2, 3, 3.2. तो 4 plus 3.2 is what? 7.2 or not? Yes or no? Yes, yes. हुरैरा, रमशा समझ आ रही है बेटा? जी. ओके, ये देखो रमशा, ये 3 से 2 तक हो गया 1 यूनिट और 2 से 1 तक हो गया दूसरा यूनिट. सर ये ओके 3.15 है. ना 2.2 यार, क्या हो गया तुम्हें? दो डब्बे हैं. चेक. हाँ, yes, sir. 2.2. 1, 2 and that would be 2.1 and 2.15. That would be 2.15. तो एस्टिमेट कर लें बेटा ग्रेडियंट जरा कैलकुलेटर पे डाल के. 7.2 डिवाइड बाय 2.12. मेक इट क्विक. सर 3.34 है. क्या रहा है? 3.34. See, the result is positive because we know that it's positive. Agree everybody? Yes or no? बेटा ये तो 2022 का केस था, ठीक है. इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों ने अपना पेपर ही देना होगा, तो कोशिश कीजिएगा कि जो चीजें सिखा रहा हूँ उसको सीख लें. अच्छा, एक पार्ट है वो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जरा मुझे वो पेपर निकालने दीजिएगा. आप लोगों के पास ये पेपर है और आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पेपर मिल जाएगा. अच्छा, डोंट यू वरी. अच्छा, फिर इसके बाद ओके फंक्शन आ गया जी. तो जो लोग नहीं थे जरा देख लें. एफ ऑफ 8, इसका मतलब है एक्स की जगह पे 8 डाल लें. f8 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस 7. 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 7 क्या आता है मेरा बेटा? जरा जल्दी बोल दें, किधर जल्दी हो जाए यार, मैं भी थक गया हूँ. 57. ओके, जी ऑफ -2 का मतलब है रमशा जी में -2 पुट करो. तो g of -2 is equals to 4 - 3 into -2 डिवाइड बाय 2. बेटा कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये गलती भी कैलकुलेटर में नहीं करना, तो फ्रैक्शन का बटन दबा के आराम से कैलकुलेटर पे कर दो. 4 + 6 डिवाइड बाय 2, सो द आंसर इज 5. ठीक है बेटा. Okay, g inverse of x, boys and girls, we know that there are 4 steps. The first step is let function equals y. बार बार लिख रहा हूँ तो आप लोग भी बार बार लिखेंगे. अच्छा, function is equals to y, तो function को y के इक्वल लिखें, तो आंसर would be y is equals to 4 - 3x divided by 2. Second step is Hurera make x the subject, so it would be 2y is equals to 4 - 3x. फिर 4 को इधर लेकर आए तो माइनस हो जाएगा, तो -3 को डिवाइड करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा. हमें पता है रमशा के तीसरा स्टेप है रिप्लेस x with y. रिप्लेस x with y. x को y के साथ रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 2x - 4 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू y. मैंने आपको कहा था मैथ्स में ये बहुत वल्गर होता है कि आप डिनोमिनेटर में माइनस का साइन छोड़ें, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करें, ऊपर वालों के साइन चेंज कर दें. तो ये हो जाएगा 2x - 2x + 4 डिवाइड बाय 3. तो ये हो गया जी आपका आंसर, ये आपका इनवर्स फंक्शन हो गया. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है. आप लोग बस खाली जरा सीखते जाओ, जहां जहां पे फंसो वहां पे मुझसे पूछो. ओके, लिखा है f of 2x - 1. सो क्या नाम है आपका? हुरैरा. जी सर. Can you see that f of 2x - 1? It means that we have to use some f of x function. So let's see what f of x is first. F of x is equals to x square minus 7. F of x is equals to x square minus 7.
It means that we have to put 2x minus 1 in place of x. So it would be something like 2x minus 1 is equals to 2x minus 1 whole square minus 7. And this is second identity, a minus b whole square. So a square minus 2 into a into b plus b square, done. Minus 7 is out. So it would be 4x square minus 4x plus 1 minus 7. 4x square minus 4x minus 6. Okay, now we have to add 3 with that because in the question we have this plus 3 as well. So it would be 4x square minus 4x minus 6 plus 3 equals 0. So now the question is quadratic. Minus 4x minus 3 is equals to 0. It's not written कि हम लोग इसको कैलकुलेटर पे करें या मिड टर्म ब्रेक से करें या उससे करें. तो हम लोग एग्जामिनर के लिए इतना दिल का जोर नहीं है हमारा, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे. So ax square plus bx plus c is equals to 0. So the value of a is 4, value of b is minus 4 and the value of c is minus 3. बेटा इसमें कॉमन गलती पेपर में होती है ना, a b c की वैल्यू बच्चे गलत प्लॉट करते हैं. तो कैलकुलेटर यूज करें. x is equals to minus b, तो minus b plus minus square root b square minus 4a is 4 and c is minus 3 whole divided by 2 into 4. जरा कैलकुलेटर में डाल लें बेटा, बता दें मुझे आंसर कि x1 क्या आ रहा है और x2 क्या आ रहा है. Okay, x1 is 1.5 and x2 is minus 0.5. राइट हो रहा है, समझ आती है ना बेटा, ये तो करा चुका हूं ना यार 200 दफा. 4 नंबर है इसके. ठीक है हो रहा है ना. रामशा. Yes, sir. नूर. Yes, sir. गुड जॉब. चलो मैं इसको डन करके सेव करता हूँ, फिर मैं शेयर करूंगा. ठीक है. ओके जरा देखते हैं आगे और क्या है हमारे पास. यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे नहीं मिली अभी तक, ये पता नहीं क्या मसला हो गया. वेट वेट वेट, हो सकता है भी आ जाए हमारे लिए. ओके 2221 आया था. अच्छा 21 हमने खोला था क्या? 22 खोला हम लोगों ने. मार्कअप ये वाला ग्राफ हम बाद में कराएंगे आपको, इसके लिए आपको जरा वो पढ़नी चाहिए. चलिए 2022 भी हो गया, अक्टूबर नवंबर हो गया, मैं जून देख लेता हूँ जरा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आई है कि नहीं. किधर बहुत कुछ कर लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हाँ ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था. हाँ ये तो क्वेश्चन हमने क्लास में किया है ना. D is the point 46 and E is the point EE. रिमेम्बर दैट. लेंथ का फॉर्मूला लगाना था इसमें. ऐसा ही है. चलो ना गाइस, से यस और नो. Yes. हाँ चलें ये कर लेते हैं भाई, रिकॉल हो जाएगा क्वेश्चन का. इट्स 2-1 मई जून 22. मार्कअप 2-1 मई जून 22. बेटा खूब प्रैक्टिस करें, कल एकेडमी में टेस्ट जो है ना वो फंक्शंस में होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा, ग्राफ ऑफ फंक्शन में होगा और लास्ट टॉपिक है हमारा एवरीडे मैथ्स. P is the point and Q is the point. Find the length of PQ. So length formula is square root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. So square root पहले मेंशन कर दें x1 y1 x2 y2 प्लॉट करें. 5 minus into minus 3 whole square plus, सॉरी ब्रैकेट गलत जगह पे लगाई, देखें ये एरर हो सकता था आपसे भी. अभी भी गलत हो गया. Plus x2 is 1 minus 3 whole square. So what is the answer beta? Minus minus plus 8 square 64 plus minus 2 square is 4. स्क्वायर रूट 68 क्या आता है बेटा आंसर? जरा बता दे बच्चा. कैलकुलेटर अलाउड होगा आपको. स्क्वायर रूट 68 is 8 point something. 0.24. जी 8 point 8.4. ओके 8.246 आ रहा है.
8.246. According to the camera, we have to leave the answer till 3 significant figures. So that is what my third significant is. So 8.25 units. Okay. Find the equation of the perpendicular bisector of the PQ. जहां पे भी perpendicular bisector आ जाए, equation आ जाए, तो इसका मतलब है कि PQ के perpendicular bisector की आपने निकालनी है. तो ये perpendicular, ये होगा इसका bisector होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 जो है ना -1 होने वाला है. पहले तो हमें m1 और m2 निकालना पड़ेगा, ये थ्योरम लगेगा. ओके. दूसरा ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर होगा मिड पॉइंट. क्या होगा? मिड पॉइंट. तो दोनों काम करने हैं. पहले मिड पॉइंट ऑफ PQ निकाल लेते हैं. x1 + x2 डिवाइड बाय 2. तो ऊपर हमारे पास पॉइंट लिखे हुए हैं. सो 3 + 1 3 + 1 डिवाइड बाय 2 कॉमा, फिर क्या है -3 + 5 -3 + 5 डिवाइड बाय 2. ओके. So 3 + 1 is 4 divided by 2 is 1, and that is 2 by 2 is also 1. So it means that 1 1 is the coordinate. Is this clear everybody? Yes or no? So m1 में find कर रहा हूँ बेटा लेफ्ट साइड पे. m1 is y2 - y1. So ऊपर लिखा हुआ है कि जी बेटा. It's 2 1. Okay, yeah, 4 divided by 2 is 2. Thanks नूर, बचा लिया. बड़ा गलत हो जाता क्वेश्चन हमारा. Thanks. So it's 2 1. So m1 is gradient. So 5 y2 - y1. So 5 minus into -1 -3, sorry, and x2 - x1. So 1 - 3 minus plus. So 8 divided by -2. So it is -4. Right Ramsha, मेरा बेटा समझ आ गई. m1 आ गया. Yes. अब -4 m2 is equals to -1. तो m2 की वैल्यू होगी -1 divided by -4. So इसका मतलब है it's 1/4. Is this clear everybody? Yes or no? Yes or no? वेरी गुड, जबरदस्त. अब हमने m2 की इक्वेशन निकालनी है. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y is equals to mx plus c. I know that the gradient of the m2 is m2 ब्लू लाइन निकालना है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है. pq की इक्वेशन तो हमें चाहिए नहीं. तो y, the gradient of the perpendicular bisector is 1/4x plus c. As we know that the gradient is passing from 2 1, so we have to put x is equals to 2 and y is equals to 1 in this equation to find out c. So 1 is equals to 1/4 into 2 plus c. So cutting can happen. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. So wait a minute, 2 equal डाल दिए. So 2. So it would be 1 is equals to 1/2. 1 is equals to 1/2 plus c. यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं. तो 1 minus 1/2 is equals to c. अब 1 minus 0.5 is 0.5. Common sense. So 0.5 is equals to c, और c is equals to 1/2. So equation of the line लिख लें. y is equals to mx plus c. तो mx plus, तो m जो था इसका था 1/4x, और c की वैल्यू आई है 1/2. So that is what the answer is for 5 marks. Is this clear everybody? Yes or no? बेटा सबको क्लियर है जी? मेरा बेटा, मैंने कोशिश की है कि ये तकरीबन कोई 1 घंटे से इस क्लास को, कि आपके सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं. इस पॉइंट्स को रिवाइज करें. ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं टेस्ट जो है कल ऑनलाइन भिजवा दूंगा. वो लोग ऑनलाइन अटेम्प्ट करें टेस्ट को, ठीक है. और जो अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो अकेडमी में करेंगे, और क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल की क्लासों में करेंगे. आई विश कि आप लोगों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए. कोशिश करें ये जो 3 टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं आज, आप इन 3 टॉपिक्स को चीर फाड़ दो, ठीक है. एक एक क्वेश्चन को करो अटेम्प्ट, क्वेश्चंस के ऊपर लगाओ बुक मार्क, ताकि कल टेस्ट के बाद आपके पास थोड़े से क्वेश्चंस हों, ताकि आप मुझसे पूछ सकें कि ताकि कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा. इज दिस क्लियर? ये हमसे हो नहीं रहा था. तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. ठीक है जी, चलें. ओके, टेक केयर एवरीबॉडी. अल्लाह हाफिज. क्लास यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी. समझ ना आए तो वहां पे मिल जाएगी. नोट्स जो है ग्रुप में मिल जाएंगे जी. टेक केयर, बाय बाय. अल्लाह हाफिज.